Hello everyone, last lecture, that is topic number 14, basic principles of organic chemistry. We are completed nomenclature of organic compounds. In this nomenclature of organic compound, we are already completed different types of alkyl groups having a common name as well as IUPAC name, and different types of functional group attached to the carbon atom. These are the having different types of IUPAC name we are already completed, such as a single carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond means alkane, alkene, alkyne. Then OH is the functional group. Then amide, amine, ketone, carboxylic acid, etc. Ether. These are the different types of the functional group can be used and completed different types of the IUPAC name of given compound. Now we are starting the same topic, but new point is nothing but the IUPAC name of substituted benzene. Means benzene के हम लोगों को different types of IUPAC name आप लोगों को completion करना है. सिर्फ इतना ही नहीं तो इसके कुछ IUPAC नेम स्पेशल नेम करके भी है, वो भी हम लोगों को इधर कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट इज नथिंग बट द बेंजीन. दीज आर द स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर these are the IUPAC name of substituted benzene. Only benzene, two benzene, three benzene as well as substituent group attached to the benzene, two substituent group attached to the benzene. These are the different types of the examples we are completed. First, these are the structure, only structure, and this structure is called as benzene. What is the name of this compound? Is nothing but the benzene. Each and every element. What is the mean by aromatic compound? These are the very important points in aromatic compound. These are the organic compound in which contain at least one benzene ring in their structure is called as aromatic compound. These are the main important point is aromatic compound because these are the at least one benzene ring. These are the benzene ring having alternate double bond and aromatic in nature, which are follow Huckel's rule or Huckel's rules also. Okay, these are the very important one. Second one, fen. These are the structure as a containing aromatic in nature, and they follow Huckel's rule. What is the IUPAC name of this compound? Because two benzene rings combine together. Okay, what is the IUPAC name? The IUPAC name is nothing but the naphthalene. But the IUPAC name is nothing but the naphthalene. इसका IUPAC name क्या है? Benzene. Second, two benzene ring attached to sideways is nothing but the naphthalene. NaPH-THALENE. Okay? ये आप लोगों को भूलना नहीं है. These are the very important in the IUPAC name of substituted benzene point. Next example is nothing but the this one, which containing three benzene ring attached to sideways. These are the first benzene ring, second benzene ring, third benzene ring, which are containing aromatic compound. These are the aromatic in nature. They follow the Huckel's rule. So what is the IUPAC name of this compound? The IUPAC name of this compound is nothing but the anthracene. Is nothing but the anthracene. Means first, only one benzene ring in their structure is called benzene. Two benzene ring attached sideways is nothing but the naphthalene. Three benzene ring is nothing but the anthracene. Okay, these are the very important according to state board level, NCERT level and CET-JEE and NEET level also, because these are the different types of the example are available in aromatic compound topic, that is hydrocarbon topic. Okay, next one, these are the substituent, that is monoseptian benzene. Fine, it contain only one substituent group in their structure. So these benzene and these are called as side chain. So this CH3 is nothing but the side chain and these are the main chain, that is the main benzene ring. And these contain, so what is the IUPAC name of this compound? तो इसका IUPAC नेम करते समय फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. अगर साइड चेन में देखा जाए, दिस साइड चेन, इस साइड चेन में ओनली वन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट
and main chain में it is total 6 carbon atoms are present in their structure. So which one is the longest chain? Then these are nothing but the 6th one, that is benzene. So it's called as methyl benzene. Methyl benzene is the correct IUPAC name. अगर 2 carbon atom having benzene ring, ethyl benzene. 3 carbon atom having benzene means propyl benzene. Then butyl benzene. These are the IUPAC name of this compound. It is also be called as toluene. The special name of this compound is nothing but the toluene. Means methyl benzene are also called as toluene. T-O-U-L-E-N. Okay? Methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, because this side chain having lowest carbon atom and main chain having higher one carbon atom. Okay, next example is nothing but the benzene plus side chain. These are the substituent group CH3CH2 and these are the, but in this case the first select the longest chain of carbon atom. अगर longest chain carbon atom हम लोगों को सिलेक्ट करना है तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन एटम है और लॉन्गेस्ट चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है. सो सिलेक्ट करना है आपको लॉन्गेस्ट चेन. मतलब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है तो दीज आर द बेंजीन रिंग आणि दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. सो अभी लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, इज नथिंग बट द एलिफेटिक वन. दिस बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसको मैं स्क्वायर करता हूं. दिस आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. इधर भी मैंने स्क्वायर किया है साइड चेन को. दिस आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बिकॉज इट कंटेन लोअर कार्बन एटम, दैट इज लोएस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. इट कंटेन मोर कार्बन चेन. It contain more carbon chain, that is side chain, but it contain less carbon, that is 6 carbon. This contains 7 carbon. So these are the longest chain, that is parent chain. These are the substituent group. According to rules, first select the longest chain of carbon atom, जो हम लोगों ने कर दिया है. अभी नंबरिंग करना है. नंबरिंग करते समय लेफ्ट साइड नंबरिंग और राइट साइड नंबरिंग. अगर लेफ्ट साइड नंबरिंग करना है तो ब्रांचिंग हैविंग द लोएस्ट नंबर एंड राइट साइड भी नंबरिंग करना है तो ब्रांचिंग हैविंग द लोएस्ट नंबर. तो इस रूल से हम लोगों को अगर मैंने राइट साइड से नंबरिंग किया तो ब्रांचिंग दैट इज दिस वन 7 नंबर आएगा. अगर मैंने इसको नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर दिया तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा. तो लोएस्ट नंबर इज नथिंग बट द 7 मीन एंड फर्स्ट में फर्स्ट इज द लोएस्ट नंबर. सो ऑलवेज राइट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 means square. 7 means is nothing but the heptane. Okay, 7 means heptane. Why heptane? Because it contain any, that is each and every carbon atom having single bond. अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो अलग बात होती. अभी each and every carbon atom having a single bond and total number of carbon 7, because one carbon with single bond methane, then ethane, then propane, then butane, then pentane, that is 5 carbon atom with single bond, then hexane and then heptane, total 7 carbon atom. Okay, heptane. But the first number attached to substituent group. So what is the substituent group? Not benzene. It converts into phenyl group because substituent group. So is nothing but the 1 phenyl. 1 phenyl heptane is the correct IUPAC name. 1. These are the methyl benzene. These are the IUPAC name. These are not a heptyl benzene because longest chain की रूल वजह से आपको longest chain aliphatic one is the longest chain and benzene is the substituent group. So it is called as 1 phenyl heptane is the correct IUPAC name. Okay. Next one. In this chain, the substituent group attached to the benzene ring, but this side chain and these are the main chain. But in this case 1 2 3 number carbon atom and in this case this benzene ring contains 6 carbon atom. So first select the longest chain. तो आप लोग क्या करेंगे तो बेंजीन इज द लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है और इसमें 3 कार्बन एटम है. बट दीज आर रॉन्ग आंसर. व्हाई? बिकॉज दिस साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH that is alcohol, that is CHO aldehyde, ketone, carboxylic acid. So if in this benzene ring attached to the side chain of carbon atom are present and any functional group, कौन सा भी रहने दो, तो वो फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको हमेशा साइड चेन इज द पेरेंट चेन एंड बेंजीन रिंग एज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप.
ओके तो अभी साइड चेन कौन सी है, तो CH2 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 Cl, दीज आर द पेरेंट चेन, ओके एंड दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अभी फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी लॉन्गेस्ट चेन 6 की नहीं है, why? Because in the side chain having a functional group, so these are the longest chain, that is parent chain। अभी नंबरिंग करना है, नंबरिंग करते हैं, मैं आपका रूल पता ही है, इससे पहले भी मैं बोला है, फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस फंक्शनल ग्रुप हैविंग अ लोएस्ट नंबर। अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन हैविंग अ लोएस्ट नंबर, तो आपको हमेशा इधर से नंबरिंग करना है 1 2 एंड 3 1। अभी ये नंबरिंग करने के बाद फर्स्ट नंबर को कुछ तो अटैच है, थर्ड नंबर को कुछ तो अटैच है, उसी तरह से हम लोग अगर नेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा दीज आर नथिंग बट द 1 क्लोरो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली रूल। फर्स्ट राइट करना है क्लोरो C, देन फिनाइल 3 फिनाइल 1 क्लोरो 3 फिनाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, प्रोपेन, हैविंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन मींस 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन इज द करेक्ट आईपीसी नेम। तो इन तीनों में से एक बार फिर से समझ लो, पेन ओनली वन बेंजीन रिंग अटैच टू द कार्बन एटम दैट इज साइड चेन हैविंग मिथाइल इथाइल प्रोपाइन मींस total number of carbon atom below the total number of carbon atom in the side chain lowest carbon atom, then benzene is the parent chain and substituent side chain is the substituent group. But if more than 6 carbon atom in the presence in the carbon benzene ring at the side chain of the carbon atom, then it is converted into, that is aliphatic one is the parent chain, so it is nothing but the 1 phenyl heptane। नंबरिंग करते समय इन अल्केन ब्रांचिंग हैविंग अ लोएस्ट नंबर, but in this case side chain having a lowest carbon chain and benzene having a more carbon chain, but this side chain contain functional group, during this reason this side chain having a parent chain and during this reason you are first select the side chain that is 1 2 3 and numbering करते समय आपको नंबरिंग किस तरह से करना है, these are the functional group हैविंग लोएस्ट नंबर। अभी लोएस्ट नंबर करना है फंक्शन ग्रुप का, तो आपको इधर से भी इधर कौन से भी लोएस्ट नंबर कर सकते हैं। तो अभी लोएस्ट नंबर करते समय आप लोगों को इधर से क्यों करना है, बिकॉज क्लोरीन हैविंग अ लोएस्ट नंबर। अभी क्लोरीन को नंबर क्या है, 1 क्लोरो 3 फिनाइल, ओके सो 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन इज द करेक्ट आईपीएससी नेम। समझ में आ गया, ठीक है। देन इज नथिंग बट द 3 बेंजीन रिंग अटैच in a such way that जब in the structure of given compound containing more benzene ring in their structure, only one नहीं, 2 or more than 2 benzene ring in their structure, तो always convert into phenyl group। so these are the phenols not benzene ring। so इसको longest chain में completion करते समय सेंटर में ये दोनों इधर अटैच है, तीनों 1 2 3, तो ये तीनों जब इधर अटैच है तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन इज नथिंग बट द ओनली वन कार्बन एटम, व्हाई, बिकॉज इज अटैच टू दैट कार्बन एटम इन दिस स्ट्रक्चर हैविंग 3 बेंजीन रिंग, ओनली वन बेंजीन रिंग इज द पैरेंट चेन, 2 बेंजीन रिंग इट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल ग्रुप। इफ 2 बेंजीन रिंग अटैच ईच एंड एवरी कार्बन एटम मीन्स अलग अलग से इज कॉल्ड बाइफिनाइल, देन ट्राइफिनाइल, ओके फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर ए बेंजीन रिंग मैंने इस तरह से अटैच कर दी, सिंगल रहता तो बेंजीन रिंग, दोनों अटैच इस तरह से, इसको कहते हैं बाइफिनाइल। अगर और एक है इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल, बाइफिनाइल और इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल। इसी तरह से ये अटैच है लेकिन तीनों इसी में अटैच नहीं, इसी तरह से अटैच नहीं, थोड़ा सा अलग से अटैच है, दैट इज दे आर अटैच इन द सिंगल कार्बन एटम। सो इसका आईपीसी नेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो चेंज कौन सा आईपीसी नेम होगा वो आपको दिखाता हूं। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन इज नथिंग बट द मीथेन, the longest chain is nothing but the methane and this methane having a first number, and only one carbon atom present in their side chain, that is methane, and these are the phenyl group. How many phenyl groups are present? 3, so it is called as triphenyl, that is 1 1 1 5
3 टाइप, जैसे हम लोगों को 1,1 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, उसी तरह 1,1,1 ट्राइफिनाइल, 1,1,1 ट्राइफिनाइल मीथेन इज द करेक्ट आंसर. Okay, these are the different types of the example. These are the substituent benzene rings. Okay, these are having side chain. These are having 3 benzene ring in their structure. These are the different types of the examples. Then next example is functional group directly attached to the benzene ring, that is OH group. In this OH group is directly attached to the benzene ring, so it is called as phenol. It is not an alcohol. Why it is not an alcohol? Because OH is directly attached to the benzene ring is called phenol. It is also be called as carbolic acid. Okay, when OH group is directly attached to the benzene ring is called phenol. Okay, अगर ये OH group not attached directly attached to the benzene ring, it attached to the carbon atom and then attached to the benzene ring, it is nothing but the alcohol. For example, अगर मैंने इस तरह से लिखा होता, इधर CH2 लिखा होता और फिर मैंने OH लिखा होता, this OH is not directly attached to the benzene ring, it attached to the carbon atom and then carbon atom attached to the benzene ring. So these are not a phenol, these are an alcohol, because and these are the example alcohol. It is called as benzyl alcohol. ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है कि ये थोड़े से अलग से एग्जाम्पल रहते हैं. ये सब आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल आप लोगों को 12th में अल्कोहल टॉपिक में मिल जाएंगे और उसी में हम लोगों के इतने सारे एग्जाम्पल कवर करना है. अभी OH ग्रुप दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज नथिंग बट द फिनॉल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. दीज आर द स्पेशल नेम. These are the compounds which are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the special name of the compound. They are not जिस तरह से हम लोगों को नंबरिंग करना है फिर राइट करना है, इसी तरह से इसके नेमिंग नहीं होंगे. These are the special name. आप लोगों को इसको नंबरिंग नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली नेम करना है. जिस तरह से हम लोगों को इसको टोलिन बोला है, ओके, मिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट द टोलिन, उसी तरह से इसका स्पेशल नेम है. तो इसका स्पेशल नेम है फिनॉल. Second one, these are the special name is nothing but the aniline, because benzene ring directly means when NH2 group, that is primary amine group, directly attached to the benzene ring is called aniline. These are the special name of the given compound. Okay, these are the primary amine. अगर NH attach होता that is secondary amine. अगर only N attach होता that is tertiary amine. अभी these are NH2 group present, that is NH2 means amino functional group, and this amino functional group is directly attached to the benzene ring is called aniline. Okay, it is also be called as, another name of this compound is nothing but the benzene, BNZENE, and this E replaced by amine, so it is also be called as benzene-amine also. Okay, aniline. These are the special name of this compound and it is also be called as benzene-amine. Fine, because benzene is replaced by primary amine, that is amine. Benzene-amine, these are the primary aromatic amine. Okay, next, these are nothing but the ether function group present in this bond. So it is called as common name. These are the methyl group, these are the phenyl group, and according to rules, alphabetically rules, methyl phenyl ether is the common name, but we are completed the IUPAC name, so it is also be called as methoxybenzene. क्योंकि these are the square हो जाएगा. फर्स्ट select the longest chain attached to the oxygen atom. अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो 6 के longest chain और राइट साइड में देखा जाए तो only 1, so it is nothing but the methoxybenzene. So it is the special name is nothing but the anisole. It is also called as anisole also. It is also called as anisole. Means methoxybenzene is the IUPAC name as well as anisole is the main, that is nothing but the special name of the given compound.
कुछ एग्जाम में आप लोगों को एनिसोल इज डायरेक्टली करके क्वेश्चन आएगा और किसी एग्जाम में आपको मिथॉक्सीबेंजीन करके भी आईपीसी नेम आ सकता है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। दीज आर कॉल्ड मिथॉक्सीबेंजीन एज वेल एज एनिसोल। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द बेंजीन COCH3, दैट इज नथिंग बट द कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। So in this ketone is nothing but the methyl phenyl ketone। जिस तरह से मिथाइल फिनाइल ईथर, इस तरह से मिथाइल फिनाइल कीटोन इज द कॉमन नेम। व्हाट इज द आईपीएसी नेम? तो इसका आईपीएसी नेम करते समय इसका डायरेक्टली स्पेशल नेम है। तो स्पेशल नेम कौन सा है इसका? तो इसका स्पेशल नेम आप लोगों को लिखना है इज नथिंग बट द एसीटोफिनॉल। इसका स्पेशल नेम इज नथिंग बट द एसीटोफिनॉल। These are the मिथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल। उसी तरह से इसका स्पेशल नेम है। ये सब जो कंपाउंड है इसके सबके स्पेशल नेम है। These are the phenol, these are the aniline, these are the मिथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल, these are the acetophenol, these are the special name. Next one, this NO2 group as a functional group attached to the directly benzene ring. So these are nothing but the nitrobenzene. These are called as nitrobenzene. These are nothing but the nitrobenzene. Means NO2 group directly attached to the benzene ring is called nitrobenzene, is the special name of this compound. That is nothing but the when SO3H group attached to the benzene, these are the sulfonic acid group, functional group, and directly attached to the benzene ring, so it's called as benzene sulfonic acid. So it is called as benzene sulfonic acid. These are the sulfonic acid functional group. Next one, having these are the monosubstituent. Mostly example मैंने जो अभी ले तो monosubstituent क्या भी disubstituent. In this disubstituent, these are the both halogen atoms are attached to benzene ring either similar, and in this case both halogen atom attached to the benzene ring as a different one. तो इसके इस तरह के एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ गए तो आपको किस तरह से कंप्लीट करना है? तो first select the longest chain of carbon atom, that is benzene ring, then branching having a lowest number. If second branching, these two branching having a sum of the locons are very low. जो लो आपकी जो बेरीज रहेगी किसकी? सम ऑफ लोकन्स मीन्स इसका जो नंबर आएगा और इसका जो नंबर आएगा इन दोनों का बेरीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर दिखाता हूं। अगर मैंने इस तरह से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का नंबर आएगा तो इसका सम हो जाएगा 3। अगर कुछ बच्चों ने इस तरह से नंबर किए, दिस आर द फर्स्ट, दिस आर द सेकेंड, थर्ड, 4 5 एंड 6, ओके, इस तरह से भी कुछ बच्चे नंबर कर सकते हैं। तो 1 6 नंबर आएगा, तो 1 + 6 टोटल आ जाएगी 7। तो इन दोनों में से दिस आर कॉल्ड एज सम ऑफ द लोकन, यानी कि जिसका ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग को अगर नंबर देने के बाद उसकी सम दैट इज बेरीज और कितनी आते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड्स है। अगर 1 2 मैंने नंबर दिया तो 3 सम टोटल आ जाएगा। अगर मैंने इस तरह से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 तो उसका टोटल आ जाएगा 7। तो इन दोनों में से जिसका सम ऑफ द लोकन्स आर वेरी लो, दिस आर द करेक्ट नंबरिंग। सो 3 1 थर्ड वन इज द लोएस्ट वन। आप लोगों को तो इसमें दोनों में समझ में आ जाएगा कि थर्ड वन इज द लोएस्ट वन। सो ड्यूरिंग दिस रीजन दिस आर द थर्ड वन इज द लोएस्ट वन। सो मैंने जो नंबरिंग की है दिस आर द करेक्ट नंबरिंग। एंड 1 2 3 इधर से क्वेश्चन ने अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर नंबरिंग की होगी दिस आर द रॉन्ग नंबरिंग, दैट इज दिस वन। सो आप लोगों को इस तरह से नंबरिंग करना है और इस तरह से नंबरिंग इज द रॉन्ग वन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज द करेक्ट नंबरिंग बिकॉज ऑफ लोएस्ट सम ऑफ द लोकन्स। ओके, देन अभी 1 नंबर पोजीशन को एक क्लोरीन है, सेकेंड नंबर पोजीशन के क्लोरीन है, दैट इज नथिंग बट द 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो और ये जो रह गए वो बेंजीन। सो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन 1 2 dichlorobenzene is the correct IUPAC name. And last one same ही है, 2 halogen atom attached to the benzene ring, but in this case फर्स्ट नंबर आपको देना है।
First select the longest chain of carbon atom, that is benzene, and then branching having a lowest number. अभी इसमें भी क्लोरीन है, इसमें अगर फर्स्ट नंबर कुछ बच्चे इसको दे सकते, कुछ बच्चे फर्स्ट नंबर इसको दे सकते, तो इसको फर्स्ट नंबर देना है, इसको फर्स्ट नंबर है। आपका रूल कुछ, आप लोगों को अगर रूल पता है तो ही आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो रूल क्या है, अगर सेम अगर halogen atom attached to the benzene ring, then these are numbering is nothing but the alphabetically rules, that is chloro is contain carbon, that is C first, and iodo contain iodine is the first. So these are the rules during this reason. The chlorine is the first preference according to alphabetical rules. So second one, these are the third one, these are the fourth one, fifth one, sixth one. So these are the 1 chloro 4 iodo. 4 iodo first नहीं लिखना है, because alphabetically rule chlorine is the first and iodine is the second one. So first 1 chloro 4 iodo, 1 chloro 4 iodo benzene, 1 chloro 4 iodo benzene is the correct IUPAC. Okay, now we are completed different types of the nomenclature of organic compound according to state board level, NCERT level, CET, NEET and JEE level also, because different types of the examples we can study. In this example we are studying different types of the alkyl groups. What is the common name of alkyl group, what is the IUPAC name of alkyl group, then different types of the functional group, what is the IUPAC name of different types of functional group attached to the organic compounds, such as alkane, alkene, alkyne, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, amide, amine. These are the different types of the examples taken in this lectures, and these are the very important to CET, NEET and JEE also. Now we are completed in this lecture different types of the IUPAC name of substituent benzene, means what is the IUPAC name of benzene, two benzene combined together, 3 benzene combined together, then monosubstituent group, disubstituent benzene, and special name of different types of the aromatic compound. These are the very important according to state board, NCERT, CET, NEET and JEE level also. Okay, thank you.